Assalamu alaikum my dear students, welcome in online biology class. As we are dealing with a new chapter, and in this chapter we are talking about the different microorganisms that are helping in the production of food. So here it is a new chapter, enhancement of food production. I think already 5 sessions we have conducted based on this chapter. In last chapter we have talked about the microbes in energy production, and in that we have seen the biogas production, what are the different steps and the microorganism utilized in the biogas production. So today here we are going to deal with the new topic, that is role of microbes as a biocontrol agent. तो यहाँ पे हम लोगों को microbes का use देखना है, how they are utilized as the biocontrol agents. Now here it is the reduced syllabus, the part already I have discussed with you people, that is these are the things that is not included in your chapter. It means it's your non-evaluative part. The term biocontrol refers to the use of biological methods to control disease and pest. So it is the practice or process by which an undesirable organism is controlled by means of another organism. So it is the natural method of eliminating and controlling insects, pests and other disease causing agents, and is by using their natural biological enemies. So that is called as biological control. So the organism that suppress the growth of pests or pathogens are called biocontrol agents. Microorganisms can act as biocontrol agent due to large diversity of the target species and variety of mode of actions. Many a time we have seen that one organism is eating another organism. So that formula here we can utilize as the biological control, or we can say the pest control. So biocontrol agents, there are different agents are there, like microorganism. The microorganism that is used as a biological controlling agent, that is called as biocontrol agent. So antagonistic microorganisms like species of trichoderma, penicillium, bacillus, pseudomonas, these are the different variety or the species which we can say are used as the biological control agents. So here we are having the predatory insects that are utilized as the biological control agent. It means here one species is eating the another species. आप यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल्स देख सकते हो कि एक इंसेक्ट जो है वो दूसरी, यानी कि प्रे एंड प्रेडेटर वाला यहाँ पे जो है वो रिलेशन होता है. द प्रे इज़ द वन दैट इज गोइंग टू बी ईट एंड प्रेडेटर इज़ द वन दैट इज़ ईटिंग द एनिमी. सो लाइक दैट यहाँ पे ऑटोमेटिकली एक बायो कंट्रोल हो जाता है, एंड जिसकी वजह से नेचुरली हम लोगों को डिफरेंट टाइप ऑफ पैथोजन से छुटकारा मिल जाता है. यहाँ पे हम लोग एग्जांपल्स देख सकते हैं कि बायोलॉजिकल कंट्रोल की कैसी माइक्रोब्स किस तरीके से यहाँ पे इस्तेमाल होते हैं. सो द स्पोर्स ऑफ बैसिलस thuringiensis आर टॉक्सिक टू सर्टन लार्वे बट नॉट हार्मफुल फॉर अदर्स. तो इस तरीके से ये मतलब हुआ कि स्पेसिफिकली कुछ लार्वे के लिए ही बैसिलस thuringiensis जो है वो टॉक्सिक है, नॉट फॉर ऑल. देन अगेन द फंगस ट्राइकोडर्मा इज़ बीइंग यूज्ड फॉर फाइटिंग प्लांट डिजीजेज. ये बहुत ही फेमस है जिसको हम लोग और आगे भी देखेंगे इंशाल्लाह. देन बैकेलो वायरसेस are the pathogens used for attacking harmful insects and arthropods, and they belong to some kind of genus that is Nucleopolyhedrus. So this genus Nucleopolyhedroviruses are having the harmful attack on the insects and arthropods, and hence they are saving the plants as well as other species. The agents which are employed for this are called as biocontrol agents. Microbes are one among them. These microbes include bacteria, fungi, viruses and protozoans. Microbes as biocontrol agents act in 3 ways. Either they cause the disease to the pest, or compete, or kill. Directly they will kill them. Chemicals, insecticide and pesticides are extremely harmful to human beings and also pollute our environment. Hence the use of biocontrol measures will greatly reduce our dependence on toxic chemicals and pesticide.
that is a very common example. We can say that if we will use the more number of chemicals or insecticide or pesticide, automatically it will give a drastic effect on the human being, as well as it will give its effect on the soil also. So next time when we will sow the seeds for our next crop or next rotation, तो उसका जो है वो उसका impact next crop के ऊपर भी पड़ सकता है. So to avoid such kind of situation, simply it is better to use the biocontrol agents, so that इको फ्रेंडली मेथड में हम लोग यहाँ पे टॉक्सिक केमिकल से भी हमको और पेस्टिसाइड से भी छुटकारा मिल जाएगा, एंड अल्टीमेटली हमारा जो बायोलॉजिकल मेथड से हमारा जो प्लांट को सेव करने का जो मेथड है वो भी फुलफिल हो जाएगा. Now let's see the different examples of microbial biocontrol. Here we are going to discuss the certain bacteria as well as certain species that are using as the microbial biocontrol agents. Among that, the very first one is Bacillus thuringiensis, commonly called as BT, is used to get rid of butterfly caterpillars, where dried spores of Bacillus thuringiensis are mixed with water and sprayed onto vulnerable plants such as brassicas and fruit tree. Actually it is a gram positive bacteria and it is aerobic in nature, and it is also known as for its crystal, that is proteinaceous, and possesses insecticidal properties, so that very easily it will be able to kill the insects that are harming the crops. The parasporal body comprises of crystals and tightly packed with proteins called protoxins or endotoxins. So with the help of these protoxins or endotoxins, it is very easily killing the harmful substance. So the dried spores of Bacillus thuringiensis that had sprayed on the plants such as brassicas and fruit trees, so these spores are then eaten by the insect larvae, and in the gut of the larvae the toxin, that is cry protein, is released and the larvae get killed eventually. इसके बारे में हम लोग when we were dealing with the chapter बायोटेक्नोलॉजी, तो किस तरीके से इंसेक्ट के गट में जाके ये क्राई प्रोटीन जो है वो काम करता है, एंड कैसे बिकॉज ऑफ द स्टारवेशन कैसे वो इंसेक्ट की डेथ हो जाती है. हम लोग बहुत डिटेल में बायोटेक्नोलॉजी का हमारा जो चैप्टर है वहाँ पे हम लोग इस बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं. तो अगर आप लोगों को और डिटेल इस बारे में जाननी है तो जस्ट गो एंड वॉच दैट वीडियो ऑफ दैट बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर. इन दैट वी हैव ऑलरेडी discuss about this concept. Next one is the Trichoderma species. So these species are free living fungi found in the root ecosystem, that is the rhizosphere. These are effective as biocontrol agent of several soil borne fungal plants pathogens. So the fungus produces substances like viridin, gliotoxin, gliovirin, etc. that inhibit the other soil-borne pathogen attacking root, rhizomes, etc., causing rot diseases. So like this we can say that by using the Trichoderma species we may get rid of the different kind of soil-borne pathogen like root or rhizome. So these are the different types of we can say the slide sections taken from the real images, जहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि किस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है एंड हाउ इट इज़ वर्किंग. सो लाइक दैट इट इज़ अटैकिंग ऑन द रूट राइजोम एंड गिविंग क्योर टू द रॉट डिजीजेज. रूट के अंदर जो हिडन डिजीजेज होते हैं उसको क्लियर करने के लिए ट्राइकोडर्मा की स्पीशीज़ बहुत ही बेनिफिशियल होती है. यू पीपल माइट हैव सीन such kind of sprays are also sprayed on the plants. इट इज़ नथिंग बट दी पेस्टिसाइड्स. सो एक इंटेंशन होता है फार्मर का कि जितना ज़्यादा पेस्टिसाइड हम लोग स्प्रे करेंगे प्लांट के ऊपर उतना ज़्यादा हमारा प्लांट जो है वो हार्मफुल सब्सटेंसेस से और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से प्रोटेक्टेड रहेगा, सेफ रहेगा. बट इट इज़ अ कम्प्लीटली रॉन्ग इंटेंशन वी कैन से, और ए रॉन्ग गलत कंसेप्ट है ये, बिकॉज इसकी वजह से वहाँ पे सॉइल एज वेल एज प्लांट दोनों के लिए ये चीज़ नुकसान होती है. सो इफ यू विल टॉक अबाउट द माइक्रोबियल पेस्टिसाइड, सो दे आर द प्रोडक्ट्स based on living microorganism which are pathogenic to targeted pest. It consists of a microorganism as the active ingredient like bacteria, fungi, virus, protozoa or the nematode. The term
Entomopathogenic has a Greek origin. Entomon refers to insect, and pathogenic, which denotes causing disease. So it's a very long term effect, we can say, or very ancient kind of remedy, we can say, to kill the pesticides, or it is worked as a pesticide to kill the pest. So instead of using chemical pesticide, अगर इस तरीके से हम लोग अगर microbial based pesticides का इस्तेमाल करेंगे तो that will be more fruitful for us. So microbial pesticides are composed of microscopic living organism, जैसे कि मैं आपको बताया, वायरस, बैक्टीरिया, फंगाई एक्सेट्रा, और they are the toxin producing substances or organism. They are applied as conventional insecticidal spray, dust or granule. Their greatest strength is their specificity, as most are essentially non-toxic and non-pathogenic to animals and human. हमेशा ये देखा जाता है कि जो भी केमिकल पेस्ट हम लोग कंट्रोल के लिए यूज़ करते हैं उसका असर ह्यूमन बींग्स के अलावा प्लांट्स के ऊपर भी होता है, बट अगर हम लोग माइक्रोबियल बेस्ड पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करेंगे तो दे विल बी स्पीशीज स्पेसिफिक, यानी जिसको किल करने के लिए हमने वहाँ पे वो पेस्टिसाइड डाला है, ऑर्गेन माइक्रोबियल पेस्टिसाइड, बस वो उसी को किल करेगा, उसका हार्मफुल इफेक्ट दूसरे पे नहीं होगा. So microbial pesticide includes insecticides, fungicides, herbicides and growth regulators of microbial origin. सारी चीज़ें यहाँ पे हमको ऑर्गेनिक मिलेंगी, यानी कि there will be no inclusion of any kind of pest. जैसे कि हम लोगों ने when we were talking about the biotechnology, वहाँ पे हम लोगों ने कुछ इस तरीके से कि कैसे Bacillus thuringiensis काम करता है, तो ये भी एक जो है वो नेचुरल तरीका था. नेचुरली प्लांट के अंदर ही पेस्टिसाइड कंट्रोल वहाँ पे हम लोगों ने क्वालिटी डाली हुई थी, जिसकी वजह से एज सुन एज द इंसेक्ट विल ईट द लीफ, ऑटोमेटिकली उसके गट में जाके क्राइजीन एक्टिवेट हो जाता है, क्राई प्रोटीन, एंड देन उसके बाद स्टार्वेशन की वजह से वो इंसेक्ट जो है वो ऑटोमेटिकली डाइज, वो मर जाता है. तो इस तरीके से यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि ऑर्गेनिक तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे पेस्ट प्लांट को कंट्रोल किया. सो इफ़ यू विल टॉक अबाउट द एडवांटेज ऑफ माइक्रोबियल पेस्टिसाइड्स, तो सबसे पहला एडवांटेज ये है कि दे कम फ्रॉम द नेचुरल रिसोर्सेज, जेनेटिकली ऑल्टर्ड बैक्टीरिया, फंगाई, एल्गी, वायरस और प्रोटोजोवा बिल्कुल सेफ होता है. देन माइक्रोबियल टॉक्सिन्स आर बायोलॉजिकल टॉक्सिन मटीरियल डिराइव फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बिकॉज माइक्रोबियल पेस्टिसाइड है. इट्स पैथोजेनिक इफेक्ट्स इस स्पीशीज स्पेसिफिक, कोई किसी और के ऊपर उसका हार्मफुल इफेक्ट नहीं होगा. इकोलॉजिकली सेफ है, लेस हार्मफुल है. इंक्लूड इंसेक्टिसाइड, हर्बिसाइड एंड फंगिसाइड, यानी कि ओवरऑल हम लोगों को सारी तरह के पेस्ट से इसका हमको कंट्रोल मिल जाता है. तो यहाँ पे हम लोगों को कुछ पैथोजन और उसके होस्ट के बारे में एक टेबुलर फॉर्म में दिया हुआ है, जिसमें आप लोग बहुत आसानी से देख सकते हो कि कौन से बैक्टीरियाज हैं, लाइक बैसिलस thuringiensis, बी पैपिलाई एंड द बी लेंटिमॉब्स. बी स्टैंड्स फॉर बैसिलस हियर. तो होस्ट है जैसे कि कैटरपिलर्स है, कैबेज वॉर्म है, अडल्ट बीटल एक्सेट्रा. तो इस तरीके से फंगी, प्रोटोजोआ, वायरसेस पे आप देख सकते हो कि कौन से पैथोजेंस हैं एंड वो किस प्लांट के ऊपर वो होस्ट है. और जैसे कि प्रोटोजोआन्स की मैं बात करूं तो नियोसोमा लैक्टिस्टे ये होस्ट है, इसका होस्ट है ग्रासोपर, कैटरपिलर, क्रिकेट्स. तो इस तरीके से ये ऑटोमेटिकली किल करेगा इंसेक्ट को, पेस्ट को, और ऑटोमेटिकली यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा इंसेक्ट से और पेस्ट से हमारी क्रॉप जो है वो एकदम सेफ रहेगी. तो जो ये माइक्रोबियल पेस्टिसाइड्स होते हैं, दे आर किलिंग प्लांट वायरसेस, some are symbionts and ultimately they are killing the pest और insects. so एकदम सेफ वे में हमारी प्लांट जो है वो एकदम सिक्योर हो जाती है. Many a time we are observing that along with our main crop, certain unwanted plants are growing. So these unwanted plants are called as weeds. So weeds are the unwanted plants that grow in agricultural field, ponds, lakes, etc. Now these weeds are competing with the main crop in the farmland for water, space, minerals, light, air, etc. and also act as collateral hosts for several pathogens. यानी कि अगर ये फार्म में होंगे तो अल्टीमेटली ये लोग हम जो भी न्यूट्रिएंट्स हमारी मेन क्रॉप को सप्लाई कर रहे हैं, डेफिनेटली ये न्यूट्रिएंट कंटेंट तो उसका लेंगे ही लेंगे, साथ में दे विल बी एक्टिंग एज अ होस्ट फॉर सेवरल पैथोजेंस ऑल्सो. तो इन वीड्स का यहाँ से निकाला जाना बहुत ज़रूरी है. सो लेट्स सी हाउ इन द नेचुरल वे और हाउ बाय यूजिंग माइक्रोबियल technique how we can save our plants by these unwanted plants.
So we can use microbial herbicides, that is also called as bioherbicides. So they are used to control weeds, and these microbes are also used as herbicides. Many dicot herbs that grow in the field of cereal as weeds can be killed by certain microbes, like we can say it kills or hinder the growth of weeds. Example हम लोग देख सकते हैं पक्सीनिया, कॉन्ड्रिला टू कंट्रोल कॉन्ड्रिला जंक्शिया. तो ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को अल्टीमेटली इट इज़ ईटिंग अप, और इस तरीके से वहाँ पे उस चीज़ को कम्प्लीटली वहाँ पे सफाया हो जाता है, हम लोग बोल सकते हैं. तो इस तरीके से माइक्रोबियल हर्बिसाइड का इस्तेमाल करके हम लोग बहुत ईजीली वीड से छुटकारा पा सकते हैं. तो सम हर्बिसाइड्स की हम लोग यहाँ पे एग्जांपल्स देखेंगे, जिसके बाद बहुत ही ईजीली ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा दैट विच आर द डिफरेंट माइक्रोब्स दैट आर यूज्ड एज हर्बिसाइड्स, एंड हम लोग उसके होस्ट भी देखेंगे. Nowadays farmers are using such kind of sprays, and this sprays containing the chemicals, yes, chemicals that are used to kill the weeds. But let me tell you one thing, it is very harmful for the growth of a main crop as well as for soil also. तो इस चीज़ से छुटकारा पाने के लिए जो बेस्ट सोल्यूशन होगा that will be the microbial herbicides. So by using the microbial herbicide, we may get rid of certain chemicals that are used to kill the weeds. So let's talk about the microbial herbicides and their hosts. So here there are the pathogenic fungi as mycoherbicides like Phytophthora palmivora. It controls milkweed in orchids. Then Alternaria crassa, it used to control water hyacinth. Fusarium species used to control most of the weeds. बैक्टीरियल पैथोजेंस एज हर्बिसाइड्स, हम लोगों को देखेंगे कि कौन से बैक्टीरियाज हैं जो एज अ हर्बिसाइड यूज़ होते हैं. सो स्यूडोमोनास स्पीशीज़ अटैक्स सेवरल वीड्स, Xanthomonas species attacks several weeds, and Agrobacterium species is also attacking the weeds. तो इस तरीके से जो टारगेटेड वीड्स हैं उसको हम लोग यहाँ पे हर्बिसाइड्स अप्लाई करके वहाँ पे हम लोग उसको किल कर सकते हैं. एंड नॉट टारगेटेड सॉइल के जैसे कि गुड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो यहाँ पे बिल्कुल सेफ हो जाते हैं. तो सो टारगेटेड एंजाइम्स और स्पेसिफिक जीन्स जो होते हैं वो बिल्कुल भी सूटेबल माइक्रोबियल बुकमार्क्स वहाँ पे इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसकी वजह से ओनली जो टारगेटेड वीड्स होते हैं उनके ऊपर ही उसका हार्मफुल इफेक्ट होगा. एंड देन वीड्स विल ओनली गेट रिड अवे और दे विल गेट किल्ड बाय दोज माइक्रोबियल herbicides, and the good flora of the good microorganisms get saved from that herbicides. The next one is the insects as herbicide. So Tyria moth, it controls the weed. Senecio jacobic, then Cactyloblastic Cactorum that control कैक्टाई वीड्स. अब जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि ये कैक्टस प्लांट है, तो कैक्टस प्लांट्स के अतराफ में भी वीड्स ग्रो हो जाती है, जिसकी वजह से वो मेन कैक्टस प्लांट की ग्रोथ में इट मे गेट हिंडर. सो दैट इज़ द रीज़न यहाँ पे इस तरीके का ये बैक्टीरियम यूज़ होता है, जिसकी वजह से वहाँ पे कैक्टस प्लांट से जो भी वीड्स से जो भी उसको हार्म होगा वहाँ से उसको हटा दिया जाता है. So like that, here we have seen that how the different microbial sources utilized as the pesticide as well as the herbicide, so that the plants or the main plant will get rid away by the pest, insects as well as the weeds. So it is very important and very simple concept. Hope you have understood this, and please go through the completed part whatever we have completed. Next time again we will be with the same concept, यानी कि हम लोग अगले वीडियो में स्टार्ट करेंगे रोल ऑफ माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर. सो दैट विल बी द लास्ट बीट ऑफ योर चैप्टर. So that we will start inshallah in next video. So till that you just go through the content, and if you will be having any doubt, so just ask me, contact me and clear your doubts. So inshallah we will meet next time with a new concepts. So till that, take care. Assalamu alaikum.